So I was telling you how to divide the polynomials. Out in that series we have already solved two parts of question number 1. Here I am going to solve question part 3 for you. Okay. In this, px is x to the power 4 minus 5x plus 6 and gx is 2 minus x square. By this we will have to divide the polynomial. So what the problem here is that neither 3 power is there nor 2 power is there, and here also it is written in the reverse order. So better it should be written as minus x square plus 2. Then we will be able to better do it. Let's divide. So x to the power 4. If you are feeling, then what you can do, plus 0x cube plus 0x square minus 5x plus 6. This can help you to write the right thing in the right order. Okay. Then minus x square plus 2. By what I should divide it? Multiply. Minus x square. Because when I multiply it by minus x square, it will become plus x to the power 4, and this will become minus 2x square. So 2x square I will write in at the bottom of 2x square, and then minus plus, this is cancelled. X, there is no term of x cube, so I will have to write plus 2x square minus 5x plus 6. Now by what I should multiply it? I want to make it 2x square. क्या बनाना है इसे मुझे? 2x square बनाना है. Positive. So negative 2. Negative 2 should be multiplied. So it will become positive 2x square and negative 4. Once again I have subtracted. This has cancelled. What left is minus 5x plus 10. That will be the answer. Got the point? Have you understood it? इस तरह से इनको divide करना है. Now next question. What is there in the next question? Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. फिर से वही क्वेश्चन कि second polynomial को first polynomial से divide करके otherwise so there are other method also कि हम इसके factor निकाल लें और उनको दोनों को put कर लें, but he has said कि divide करके बताओ कि वो उसका एक factor है कि नहीं है. अब factor होने के लिए what is the condition? That this remainder should be 0. If the remainder is not 0, the divisor is not a factor of dividend. The divisor is not a factor of dividend. So to be a factor, remainder should be 0. Remainder should be 0. Another issue. That's the point. Thank you. So I am solving one question for you, and rest of the part you will solve on your own. Which one you want from me? I am solving the third part, cubic polynomial. ठीक है? So dividend is x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 is to be divided as by x cube minus 3x plus 1. Say divide. ठीक है? So what I will do? I'll have to multiply it by x square. When I multiply it by x square, it will become x to the power 5. When I multiply this, it will become minus 3x cube. And when I multiply this, it will become plus x square. And on subtracting, what I found कि this is cancelled and this is also cancelled. ये दोनों ही cancel हो गए और इसका भी तो sign change करना पड़ेगा. So what I got is minus x cube plus 3x plus 1. आप कैसे मल्टीप्लाई? माइनस से, क्योंकि ये तो यही है.
-1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -x³, ये बन जाएगा प्लस का 3x, ये बन जाएगा -1। Isn't it? कहीं कुछ गलती हो गई क्या? No sir, this is not a factor. Yes. So this is positive, this is negative, this is positive. These two are cancelled, but this is not. The remainder is 2. If there might not have been a remainder, it is a factor. Since there is a remainder, it is not a factor. Could you understand it? Yes or no? Stop writing. Do this later on. Look on the board right now. Now, question number 3 is the very important question for exam point of view. This question may come in exam as it is without changing of digit, or all the questions which are of this type are important and may be in 4 marks. और अभी तो 5 marks में आता है ना, 4 marks में नहीं आता कुछ भी। 4 में आता है क्या? नहीं sir, 3 के बाद 5. 3 के बाद 5 है, तो this may be a question for 5 marks. Okay, what he is saying that there is a biquadratic equation, biquadratic 4 power वाली equation दी हुई है, and 2 of its zeros are given, and he is asking the rest 2 zeros of the polynomial. तो कैसे निकालेंगे वो? आपने पिछले साल किया भी है ऐसा क्वेश्चन 4 पावर वाला. The only thing स्क्वायर रूट नहीं थे. So the 2 zeros are under the root 5/3 and minus under root 5/3, and the polynomial is 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. A biquadratic equation is there. So how many roots, how many zeros it will have? 4. Biquadratic equation, so it will have 4 zeros. Out of those 4 zeros, 2 zeros are these. 2 zeros means these are the values of x. These are the 2 values of x. It means x minus under the root 5/3 and x plus under the root 5/3. ये कहाँ से आया? While this root 5/3 will go that side, it will become minus. While this will go this side, so it will become plus. So these are the factors of px. These are the factors of px. Okay. So if these are the factors, so their product will also be a factor. So their product will be x square minus 5/3. X square minus 5/3 are the factors of px. और फिर हम क्या करेंगे? 3x square minus 5 upon 3 is equals to 0 करेंगे तो upon 3 तो इधर चला जाएगा. So 3x square minus 5 will also be a factor of this polynomial. Now to find out the rest of the 2 factors, I will divide this polynomial by 3x square minus 5. Have you understood it? समझ आई बात कि नहीं? सर, हाँ. ये बोल देना आंसर. कौन सा वाला? x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 के बाद 3x square minus 5 upon 3 is equals to 0 ही तो होगा भाई. अगर मैं इसको इधर रखूंगा तो क्या होगा? is equals to 0 होगा. तो upon 3 से 0 के पास जाकर 0 हो जाएगा. And then to find rest of the 2 factors, फैक्टराइजेशन किया था ना लास्ट ईयर क्यूबिक पॉलिनोमियल में, लीनियर से डिवाइड करते थे. इसी तरह से यहाँ पर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो नाउ आई एम डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय 3x स्क्वायर माइनस 5. 3x स्क्वायर माइनस 5 से मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ? 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ पहले? 3 तो नहीं है ही, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो. सो इट विल बिकम 3x टू द पावर 4 और माइनस 5x square. On cancelling the subtraction, this is cancelled. What left is 6x cube. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
थोड़ा लाइट है बट आई विल हैव टू मैनेज टुडे. कल से मैं अपना मार्कर ले आऊंगा. आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय मार्कर. माइनस 10x अब किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस 2x. So it will become 6x cube minus 10x. ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो. अब क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस 5. किससे मल्टीप्लाई करूं? प्लस 1 से. तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ये दोनों भी कैंसिल. एंड दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1. दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1. So x square plus 2x plus 1 is the whole square of x plus 1. So x plus 1 and x plus 1 are the two factors. So x is equals to minus 1 root 5 by 3 and minus root 5 by 3 are the four factors, four zeros of this polynomial. उसने कहा है ना 2 zeros are given, find out 2 zeros. So these are the those two. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. You are going to get full marks for whatsoever marks in this question. Have you understood it or not? कितने लोगों को समझ नहीं आया? So x is equals to root 2 and x is equals to minus root 2 are the two zeros of this polynomial. Okay, so x minus root 2 is equals to 0 and x plus root 2 is equals to 0 are the two factors of the polynomial. And then when we will multiply it, we will get x square minus 2 is equals to 0 is a factor of the polynomial of px. Okay, so what I'll do now, I'll have to divide it. यहाँ डिवाइड कर लेते हैं. 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is to be divided by x square minus 2. Okay, देख लो अब कैसे. So highest power is to be omitted. Highest power कैंसिल करनी है. Highest power क्या है? 4. तो x स्क्वायर को x टू द पावर 4 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x स्क्वायर से. और 2 भी चाहिए तो 2 भी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है. तो इट बिकम 2x टू द पावर 4 और 2 टू द 4 x स्क्वायर. तो माइनस का 4x स्क्वायर. ये माइनस ये प्लस ये दोनों हो गए कैंसिल. व्हाट लेफ्ट नाउ? माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. अब किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 3x. माइनस 3x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3x क्यूब बन जाएगा. उसके बाद माइनस 3x को 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 6x प्लस 6x. ये प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल. व्हाट लेफ्ट? x स्क्वायर माइनस 2. अब किससे मल्टीप्लाई करूं? प्लस 1 से. x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल. अब क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है सिर्फ. ये स्क्वायर तो है नहीं किसी का, वो तो होल स्क्वायर बन गया था. यहाँ तो होल स्क्वायर बन नहीं रहा. ये 4x स्क्वायर होता, ये 4x होता तब वो होल स्क्वायर बनता. अभी तो वो है नहीं. सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1. क्या कॉमन? 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x minus 1. So x minus 1, 2x minus 1. So x is equals to 1. X is equals to 1 by 2. यहाँ से 1, यहाँ से 1 by 2. So 1 and 1 by 2 are the other two zeros of this polynomial. And this question was an example in your book. ये example ही था आपकी book में. ठीक है? तो इतना काम निपटा लीजिए आज. Then on the basis of the same, we are having question number 4 on page 37. Question number 4 on page 37. This is also a homework for today. ये भी आज एक homework है. Tomorrow we will try to finish up this exercise 2.4 and 2.3 and then
you have to bring your RD also, so that I can tell you that which questions you will have to solve from the chapter in RD. RD में काफी लंबा चैप्टर है, तो एक हफ्ता हमें और लगने वाला है इस चैप्टर में. ठीक है, finish up this much work and then